Hi everyone, I think we're live now. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Shweta, Vishi, Karthik, Twinkle. Hello, Yash, Pradeep, Ananya, Archit. Good evening, everyone. एक पोल जो हमारी ऑलरेडी लाइव है दैट इज कि आपका जोश कैसा है, और जोश को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है. जिसका जोश बहुत लो है वो आई होप इस पर्टिकुलर सेशन के बाद यूल बी ऑल चार्ज्ड अप. प्लीज डोंट क्रिएट अ बैरियर फॉर द लैंग्वेज कि मैम इंग्लिश है, हिंदी है, वॉट एवर आई से, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इन द सेशन यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, इंग्लिश हो हिंदी हो आपको समझ में आएगा, बिकॉज ultimately the medium of writing is going to be English, so more of use of English. Okay, please English, मुझे पता था कि आएगा ही आएगा. Good afternoon everyone, I'm so happy to see you all here. I hope you're all charged up, excited. थोड़ी nervousness होगी which is obvious, but you should be excited for the session. सीए इंटर के लिए भी लेकर आओ मैम. सीए इंटर के लिए हमने भर भर के सेशंस किए थे बिफोर एग्जामिनेशन स्वयं, एंड दे आर ऑलवेज देयर, डोंट वरी एट ऑल. ओके, सीए इंटर के लिए हम बहुत सेशंस करते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंट चैनल फॉर द सेम. ओके मैम, प्लीज मेक स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स. श्योरली बहुत जल्दी वो वीडियो पुश होगा हमारा ऑन अ डिफरेंट चैनल. ऑफ कोर्स विल इंटीमेट यू. नाउ बिफोर वी बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सेशन, सबसे पहले एक लाइक तो बनता है. ओके, 1 लाइक एवरी वन फॉर द सेशन. आई डोंट नो. ओके, 123 votes have already been there for our poll. I failed by 37 marks. Okay, no problem. I think you are CA inter student as suggested, and we are going to push a video for the same. अभी हम CA inter की बात नहीं कर रहे हैं. This particular session is for my CMA final students because they have exam, right? And you just have 4 days left ideally for your examination, and we have a lot to cover. I hope you all have seen the preparation strategy video जो हमने push किया था, and following that particular strategy video, here I am sharp at 2 p.m. to take the session on IBC MCQs, right? I hope आप लोगों ने उसके हिसाब से IBC को revise कर लिया है. Everyone प्लीज एक लाइक कर दो सेशन के लिए. एंड आई वॉन्ट ऑल CMA फाइनल लॉ स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं who are targeting 70 plus in your upcoming examination? Come on, I want that attendance. How many of you are here who are targeting 70 plus in this upcoming law exams? Yes ma'am, yes ma'am, let's rock. Right, Twinkle, Swimit, Vedant. I want to see more students. Ankita, very good. और कौन है? Come on, जल्दी जल्दी बताओ भाई मेरे को. Madam, please help us to make all limits in Companies Act at one place. Okay. Well, अगर आप मेरे registered students हो, you'll have a lot of this type of compilation in the book itself. बट ठीक है, अभी मैं उस पर भी आती हूँ. मी ग्रेट. नाउ आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. 70 प्लस इज आवर टारगेट. अंकिता, दामू, रामा, ट्विंकल, सुमित, वेदांत, विशी, उर्वशी, सुमन, संतोष, निशा, विशी, पीयूष, अश्विनी. आई थिंक विशी इज राइटिंग द मैसेज अगेन एंड अगेन. बार बार लिखेंगे तो पक्का 70 प्लस आएगा ना. एंड दैट्स हाउ वी आर मैनिफेस्टिंग. कोमल, अक्षय, ईशा, राघवेंद्र, पवन, अनन्या, शुभम, वरुण, कोमल, राकेश, मनीष. ओ माय गॉड, आई कैन नॉट रीड इट सो फास्ट. चलो, प्लीज पुट सुपर 30 क्वेश्चंस. देखो, सुपर 30 क्वेश्चंस शेड्यूल्ड है. यू ऑल मस्ट हैव चेक्ड द शेड्यूल्ड लाइव सेशन, और वो मैं ऐसा नहीं कराऊंगी आपको कि आपको बस क्वेश्चंस दे के छोड़ दूं. I am going to deal with that session. So it will be somewhere around 2 hours, 2.5 hours. And that session we can only do once you have revised the entire syllabus. So it is very important that all the students revise that syllabus. If you are stressed that ma'am at last moment you'll give us the important set of questions and how we will do it, you don't have to do, my dear children. I am going to help you do that, right? So we are going to discuss those questions. It's not that I'm giving you some file. Whatever sessions I'm conducting at a later point of time, or you can say just before examination, I'm also ensuring that you don't have to put in that extra effort. Okay, so don't worry, there's a reason why everything has been planned in a certain manner. Okay, चलो शुरू करते हैं.
हमें पहचाना आपने दी 70 plus my target, ma'am. Thank you so much for your support. Okay. Please speak in English. Mostly I'm speaking in English only, Chandramouli. Don't worry. There are some parts of Hindi which you'll understand very well. And even if you don't, it doesn't really matter. Okay? So I think more than 200 students are watching us right now. And I hope everyone has already liked the video. Here we begin with our session. This particular PDF you will find in the Telegram channel. इस PDF की खास बात ये है कि इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आईबीसी एमसीक्यूज है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आईबीसी एमसीक्यूज. Why I'm saying this, that also has a reason, okay, but I don't want to elaborate all that. Most important IBC MCQs, around 22 MCQs have been incorporated over here. And एक बात और, जो आप लोगों की सबसे बड़ी दुविधा होती है कि मैम एमसीक्यू मिल जाते हैं, एमसीक्यू के आंसर मिल जाते हैं, व्हाट वी डोंट गेट इज द जस्टिफिकेशन. तो मेरा लिखा हुआ सारे के सारे क्वेश्चंस का जस्टिफिकेशन के साथ ये फाइल है. बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे टू स्टे हियर फॉर द सेशन फॉर जस्ट 20 minutes. We will wrap up this session in 20 to 30 minutes for every MCQ along with justification. आपको 1.5 minute लेना चाहिए, 1.5 minute, not more than that, for writing the correct answer and the justification. So justification, if you're not writing over here, no problem at all. I am going to wrap up the session in around 20-25 minutes. This is the first session. That's why I'm saying a lot of things. Otherwise, I wouldn't take so much of your time before examination. We'll quickly start the session. पर मैं फिर से बोल रही हूं, बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ बूस्टर सेशन फॉर यू, अ कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन. It may boost your confidence or it may shatter your confidence if you haven't studied at all. तो सेशन के एंड पे वी विल डिस्कस कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट इज योर स्कोर. हियर वी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देयर विल बी अ पोल लाइव. आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू प्लीज पार्टिसिपेट एज मच एज इन द पोल व्हिच इज पॉसिबल. अगर आपको पोल किसी रीजन से नहीं दिखती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन नोट डाउन योर स्कोर एंड यू कैन शेयर विद मी एट द एंड ऑफ द सेशन. चलो भाई शुरू करते हैं हम. जोश इज टू हाई. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. मेरा भी जोश बहुत हाई. आज पहला सेशन है यार, जोश तो हाई होना ही चाहिए ना. अब इसके बाद हमारे सेशन धीरे 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 होते जाएंगे. ओके, हियर आई एम विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू आईबीसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 365 days, 270 days, 180 days or 90 days. So we have been given 4 options. 365 days from the date of admission of application to initiate such process. Usually हमारे क्या होते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, this can also differ from option to option. यहाँ पे ये सारी चीजें एकदम सेम दी हुई है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग सा MCQ नहीं दिया है. इट इज अ वेरी क्लियर कट ऑप्शन एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टाइम लिमिट्स. यहाँ पे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन आ सकता है दैट मैम वी हैव एक्सटेंशन ऑल्सो. So what are we being asked? The total time limit or the usual or the regular time limit which has been defined. So here we are talking about the regular time limit only, the general time limit which has been given to us, right? So the correct answer is option C, 180 days. I can see 70% students giving me the correct answer. 22% students इसमें confused हुए थे. I hope I've cleared your confusion. Otherwise, you also have the justification which you can check out, right? Question number 2. Moving to question number 2. बिल्कुल सही बात है Twinkle. 330 days is the third limit which has been given. Ideally हमारे पास 180 days होता है. अच्छा, I'll not tell you the other because I have incorporated one more question. Okay, so moving to question number 2. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is not applicable on. किस पे ये नहीं लगता है? बड़ा सोच समझ के आपको आंसर करना होगा. Asset reconstruction company, partnership firms and individuals, LLP or companies incorporated under Companies Act. That means the general companies that we read about है ना, तो कंपनी पे नहीं लगता है, पार्टनरशिप फर्म्स पे नहीं लगता है, इंडिविजुअल्स पे नहीं लगता है, LLP पे नहीं लगता है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे नहीं लगता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन कंफ्यूज हो सकते हैं. रीजन बीइंग कि उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स तो देखा है, asset reconstruction company. But asset reconstruction company is what? It is this financial service provider only. So the correct answer to question number 2 is option A. Wow, wonderful. 77% students giving me the correct answer, but I can see the votes
थोड़ा हम क्विकली शायद पोल को रैप अप कर रहे हैं, इसलिए आई कैन सी कि वो थोड़े लर्नर्स के हिसाब से, वॉच लर्नर्स जो है हमारे पास उसके हिसाब से काफी कम आ रहा है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल. Participate more quickly. Moving to question number 3. The Insolvency and Bankruptcy Board has a power of which court? कौन से कोर्ट के आईबीसी बोर्ड के पास पावर होती है? They can call, right? They can call books, they can call, ask for inspection, summons, issue commissions, right? They can do a lot of things, but they have the powers of which court? Session court, high court, supreme court, or civil court? When you read the options, you will be able to recall the language of law, which is very easy, and this is just exactly one line, और उसमें से एक word हटा के ऐसे fill in the blank kind of हमको MCQ दिया हुआ है, right? So this is again a very easy and simple question. Let's check how many of you can answer this one. Right, with 71, हो, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के मन में confusion आ रहा है. Only 65% students have given me the correct answer, which is D. Option D, civil court. Option D, civil court. पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट. आई एम नॉट आस्किंग ये इसके बराबर है, उसके बराबर है, क्या नहीं है, किसकी पावर्स मिलती है. while trying to sue they get the powers of civil court, right? Question number 4. Default in the application of CIRP shall be rectified within how many days? Whenever we make an application to NCLT for CIRP, तो हमारी application या तो admit होती है और it is rejected. When it is rejected, we get an opportunity to rectify it, right? This default has to be rectified within how many days? 3 days, 7 days, 10 days, or it may be something as decided by NCLT. So these are the 4 options which are available to question number 4. Let me see कि आपने कितनों ने इसका सही जवाब मुझे दिया है. वाओ, वंडरफुल. आई एम सो हैप्पी टू सी 95% बच्चों ने इसका आंसर मुझे सही दिया है, which is actually declining. Now we somehow settle down at 90% students giving me the correct answer as B. Option B, 7 days. Moving to question number 5. Question number 5. Question number 5. Dash shall be the adjudicating authority for individuals and firms under section 179 of IBC 2016. Now, many students think कि ma'am ये particular question is not relevant for 2016 syllabus, ये तो 2022 syllabus के लिए है, because we don't have to read about personal insolvency and all that. वो तो 2022 syllabus में है. Well, let me tell you, this is the basic. Don't get on the section number, but this is the basic which we all know and which you should know. ठीक है, कि हमारी कौन सी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड व्हाट इज द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच एवरीवन कैन आंसर एंड एवरीवन शुड नो. इज इट डीआरटी, इज इट एनसीएलटी, इज इट रीजनल डायरेक्टर और सिविल कोड? सो दीज आर द 4 ऑप्शंस और मैंने तो अपना आंसर मार्क कर दिया है. Okay, great. So 72% students are giving me the correct answer, which is DRT, Debt Recovery Tribunal. Along with DRT, you should also remember the full form, क्योंकि कभी कभी ये confuse करने के लिए full forms भी बदल देते हैं. ठीक है? Okay. Fine. Question number 6. The first meeting of committee of creditors shall be held within how many days of constitution of committee of creditors? कितने दिन के अंदर अंदर आपको first meeting जो है वो करनी होती है? Is it 6 days? Is it 7 days? Is it 8 days? Or is it 12 days? ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं about the time limits, about the deadlines that either you remember or it's just a pure guess. तो कभी कभी guess सही हो जाता है, most of the time guess गलत होता है, ऐसा दिमाग में रखना चाहिए. So it's more important that you learn such type of limits. Okay. So question number 6, let me mark my correct answer. 100 votes, okay, 125 votes so far and 92% students giving me again the correct answer. I'm so happy to see. But यार around 300 बच्चे देख रहे हैं, आप लोग votes क्यों इतने कम दे रहे हो? Option B, 7 days. I think धीरे धीरे votes बढ़ रहे हैं हमारे. Moving to question number 7. Question number 7. As per section 36(4), forget about the section number of IBC, which of the following assets will not form part of liquidation estate? Liquidation estate में हमारे पास कुछ exclusions होते हैं, right? So which of this is not going to form part of liquidation estate? Assets of any Indian or foreign subsidiary of the corporate debtor,
Assets subject to determination of ownership by the court, tangible assets whether movable or immovable, all proceeds of liquidation as and when they are realized. As and when they are realized. Question number 7. So we have been given 4 options. यहां पे आता है confusion because option A और option B में students are more confused, right? And I can see that confusion in the poll also. Around 46% students बोल रहे हैं A, 45%, it's almost the same. 45% students are saying B also, right? See, undoubtedly this is the answer which you are going to mark for your examination. ठीक है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन फिलहाल मैं आपको नहीं दूंगी. ओके, दिस इज द आंसर. इफ द सेम क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू मार्क. ठीक है, स्ट्रेट अवे सेक्शन 36 में लिखा हुआ है हमारा फॉरेन सब्सिडरी के एसेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वी डोंट इनकॉर्पोरेट. ओके, fine, they are not the part of liquidation state and they shall not be used for recovery. Okay, एकदम इसको अगर आपको जरा सा भी वो डाउट है ना, यू मार्क अ स्टार ओवर हियर. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर सेम क्वेश्चन उठ के आएगा एग्जामिनेशन में, यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दिस इज द आंसर दैट आई एम गोइंग टू मार्क टू गेट मार्क्स. ठीक है, ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. इसमें से कौन कौन सी है? आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैन एवर गिव यू. मुझे इसमें 100% स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर चाहिए. 100%. एक यूनानिमस रेजोल्यूशन. लेट्स पास अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, राइट? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. अब देखो, इंस्टीट्यूट का प्यार मन में मत लेके आना कि नहीं नहीं हम तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी लगाएंगे. वी हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी. दिल तोड़ दिया मेरा. 90% स्टूडेंट्स ख्याल बोल रहे हैं सही आंसर, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि 100% यहाँ पे तो आएगा. वही आप लोगों का प्यार दिख रहा है मुझे. अराउंड 5% स्टूडेंट्स आर सेइंग नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलेंगे हम तो. वेल, ऑल द 3 आर आईपीएस. ओके, all of them. Question 8, the correct answer is D. Wonderful. 211 votes so far. Question number 9, which among the following cannot initiate CIRP as per IBC code, IBC 2016? इसमें से कौन इनिशिएट नहीं कर सकता? We have a dedicated section, right, for the same. A financial creditor, an operational creditor, any corporate debtor who commits a default, or a registrar. तो हमें पता है that we have the 3 sections. A financial creditor can initiate CIRP, operational creditor subject to the preconditions can initiate a CIRP, and corporate debtor himself can also file an application for CIRP. Who cannot file an application? मतलब ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, right? So that is answer option D. Option D. Question 9, option D, registrar. कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया? 85% स्टूडेंट्स. कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट करो इन द पोल्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग आंसर्स इन द चैट. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 10, which among the following is not a part of insolvency resolution process cost? इसमें से कौन सा IRP कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा? Any amount of interim finance and cost incurred in raising such finance. Any cost incurred at the expense of government to facilitate the process, the fees that you pay to RP, resolution professional, and none of the above. Focus everyone. We have been given 4 options. Confusion आ रहा है. देखो, जिसने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है उसको ही ये कंफ्यूजन आएगा. अदरवाइज यू विल नॉट हैव दिस कंफ्यूजन बिकॉज स्ट्रेट अवे द डेफिनेशन इटसेल्फ टेल्स अस दैट दीज it is an inclusive definition ideally, meaning है exhaustive है I would say, but there are a lot of inclusive things which are being told to us, right? तो meaning of amount of interim finance, fees to RP, the cost to facilitate the process, these are all the part of IRP. तो इसमें से कुछ भी नहीं.
None of the above. The correct answer, question number 10, ऑप्शन डी. इसको स्टार मार्क करके रखो, ठीक है, बिकॉज इसमें आप लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. मोरेटोरियम शैल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है. मोरेटोरियम शैल नॉट अप्लाई. सी, moratorium begins, right, till CIRP ends, right, but moratorium will not apply to certain transactions जिसको central government notify करती है. Central government notifies such transactions in consultation with any financial sector regulator, operational debtor, operational creditor, board of directors. तो ये 4 options दिए हुए हैं. Again, it is an easy question for the ones who have read the chapter. Question number 11, the correct answer is option A. 63% students have given me the correct answer. Okay, question number 12. Insolvency and Bankruptcy Code was passed by the Parliament in which year? 2015 में the bill was introduced, but we have been asked कि ये pass किस year में हुआ था. Passed by the Parliament definitely means that final Parliament is inclusive of our Lok Sabha, Rajya Sabha as well as the President, है ना. आइडियली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो तीनों अप्रूवल्स एक ही साल में हुए थे, बट स्टिल वी टॉक अबाउट द लास्ट अप्रूवल, राइट. सो इज इट 2014, 2015, 2016 और 2017? सो 4 ऑप्शंस. व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर दैट यू हैव टू मार्क? ओके, 81% students giving me the correct answer, which is 2016. Well done. Question number 13. A resolution professional may be replaced with the voting rights of the committee of creditors. Question number 13. 51%, 66%, 75% or 100%? Well, the correct answer to this particular question, I will say it, just a second. 2 मिनट पोल तो हो जाए, कुछ तो हो जाए. Okay, around 88% students have already given the correct answer, which is 66%. जिन बच्चों को भी इस परसेंटेज में कंफ्यूजन है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर ले, एंड कीप इन माइंड इट इज 66%. Okay, that you have to learn. Question number 14. Moving to the next question. The authority provided under the IBC to administer and regulate law is IBBI, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और नन ऑफ द अबव. यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों के मन में, which is, if you look at the question, this particular question is not my designed question, it is a question of institute that I have taken. However, I have edited it a bit. तो मैं आपको वो भी क्लैरिटी दे दूं. आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो दिखेगा that the authority provided under the IBBI. How can IBBI be the authority under IBBI? Of course, we're talking about the authority under the code, right? Or whatever you may write, but it cannot be IBBI के अंदर IBBI authority है, right? So I have slightly edited the same to make you that better understanding, because we are talking about administration and regulation of law, right? So who administers and regulates the law? It cannot be any insolvency professional or agency. It has to be IBBI only. 83%, 82% votes have been पहले हुआ करती थी. 75% डोंट गेट ऑन दैट. ओके, चलो नाउ इसीलिए कंफ्यूजन है. 66%, बस ये ध्यान में रखो. आई एम मूविंग फर्दर. क्वेश्चन नंबर 15. रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेट डेटर मीन्स. रिलेटेड पार्टी, अगेन यू नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी में क्या होता है? डायरेक्टर और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, KMP. Okay, or relative of KMP, or you can say LLP, जिसमें director, partner, manager of the corporate debtor or his relative is a partner, या all of the above. Well, we have a huge related party की definition, और
मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता होगा एंड दे माइट नॉट बी एबल टू लर्न द एंटायर डेफिनेशन, बट हाँ स्टार्टिंग के पॉइंट सबको याद होते हैं और ये स्टार्टिंग के ही हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो वी शुड बी एबल टू आंसर दिस वन. क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. 98% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. The maximum moratorium period can be of how many days? Maximum moratorium period can be of how many days? 180 days, 30 days, 270 days, or none of the above. Maximum moratorium period can be of how many days? Moratorium हमारा कब से शुरू हो जाता है? Or you can say that it ends with the completion of CIRP process. The CIRP process can be of maximum how many days out of these three? अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम द जनरल लिमिट ऑफ CIRP इज 180 days. So it can be 180 to 270 days, that is given in the book, and that perspective you already know. So you will not mark this as 180 days, you will mark this as 270 days. Okay. 41% students have only given me the correct answer. Please put a star, mark this particular question, and remember the maximum moratorium can be 270 days. Okay. मोरेटोरियम का जो हमारा टेन्योर होता है दैट इज ओनली 180 to 270 days. Anyways, moving to question number 17, subject to other conditions also. Moving to question number 17, any person to whom the financial debt is legally assigned is called as. Financial debt जिसको ओ कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा है. द फाइनेंशियल डेट जिसको लीगली असाइन हो रही है, इज इट ऑपरेशनल क्रेडिटर? No way. When we are talking about financial debt, how can it be operational creditor? Is it financial creditor? Is it so that creditor doesn't include assignment? मतलब अगर आप कभी भी creditor की बात करो तो वहां पे assignment नहीं होएगा. Or is it corporate debtor? What is it out of the four options? 81% students giving me the correct answer, which is financial creditor. Question number 17, the correct answer is B, financial creditor. Moving to question number 18. The legal authorization, सुनना बहुत ध्यान से, the legal authorization to suspend or delay repayment is called moratorium, deferment, claim, or none of the above. Legal authorization to suspend or delay repayment is called. Four options. Question number 18. 26% बच्चे कहीं ना कहीं ऑप्शन डेफरमेंट मार्क कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट. ठीक है. आर करेक्ट आंसर इज मोरेटोरियम ओनली. मोरेटोरियम इज व्हाट? एक्चुअली हमें टाइम पीरियड मिलता है ना कि सब चीजें होल्ड करो. वी गेट द लीगल ऑथराइजेशन दैट वी आर नॉट गोइंग टू रीपे योर लोन राइट नाउ. अब देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या प्लान बन रहा है, एंड द पेमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्लान. सो दैट इज द टर्म विच वी हैव रेड अंडर IBC. ओके. Question number 19. A corporate debtor shall not be entitled to make an application to initiate IRP if it has completed CIRP dash months preceding the date of making such application. मतलब आपने एक CIRP की है, उसके कितने months छोड़ के आप फिर से application दे सकते हो. मतलब अभी आपकी CIRP हुई है, ऐसा थोड़ी ना है जैसे हम हर चीज में लिमिट डालते हैं ना, बायबैक किया है तो अभी इतने टाइम के अंदर फिर से बायबैक नहीं कर सकते हैं. हर चीज की लिमिट है, तो यहाँ पे CIRP की भी लिमिट है. Preceding what? 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. What is the correct answer? Question number 19. Fine. I think you all know the answer because 86% students कहीं ना कहीं मुझे correct answer दे रहे हैं, which is 12 months. Akarshit Agrawal. Well, the game has just begun. Question number 20. Bas, last 3 questions. Question number 20. Come on, everyone. The provisions of IBC does not apply in the following case: insolvency, liquidation, voluntary bankruptcy, none of these. ध्यान से आंसर करना. Provisions of IBC does not apply in the following cases: insolvency, liquidation, voluntary bankruptcy, and none of these.
ओके, सो लेट मी टेल यू, इंसॉल्वेंसी के लिए तो होता है, दिस इज एवरी वन नो, सो यू डोंट हैव दैट कंफ्यूजन. लिक्विडेशन भी हमने पढ़ा है भाई, तो पता नहीं क्यों लिक्विडेशन के वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें तो नहीं ही होना चाहिए. वॉलेंटरी बैंक्रप्सी इज अ कंसेप्ट विच यू हैवंट रेड. वॉलेंटरी लिक्विडेशन पढ़ा है, वॉलेंटरी बैंक्रप्सी कब से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है? वॉलेंटरी बैंक्रप्सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन सी. Moving to question number 21, when an application made may be rejected by adjudicating authority under IBC. हम जब एप्लीकेशन देते हैं CIRP की, when it can be rejected by adjudicating authority, जब demand notice was not delivered, application is incomplete, some disciplinary proceeding is pending against the proposed resolution professional or any of the above. मतलब किसी भी केस में rejection हो सकता है. An easy question. Okay, great. 81% students लगभग have given me the correct answer, any of the above. When we are talking about operational creditors के केस में you also need demand notice. Otherwise जो दो बाकी B और C points हैं, they are relevant for both the cases, whether the application is made by financial creditor or operational creditor, right? So these are the common points, but demand notice we talk about only in case of operational creditor, you know that, right? चलो, और लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल. कम ऑन एवरीवन, ये पोल थोड़ी लंबी चलेगी, तो आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. भाई इस पर्टिकुलर पोल पे 300 वोट्स आने चाहिए. मैक्सिमम एक्सटेंशन विच मे बी ग्रांटेड फॉर CIRP इज 90 days, 180 days, 30 days, or no extension can be granted. We know that the time limit for CIRP is 180 days. Don't get confused. यहां पे हमसे पूछा जा रहा है the maximum extension. One time you can also get extension, right? So the maximum extension that may be granted, I told you there are 3 time limits. बच्चे उसमें confuse होते हैं. 180 days, 270 days, 330 days. Right? They all have a purpose. They all have a reason, right? So what is the maximum extension? 90 days, 180 days, 30 days, or no extension? Come on, everyone. Let's see. How many of you can get this one right? मैंने पहले ही बोला था मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जा रहा है. कुछ बच्चे लिख रहे हैं 180 डेज. नहीं होएगा यार. मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आएगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 90 डेज. ओके, इसी के साथ हमारे 22 क्वेश्चंस, वी हैव एंडेड अप विद 22 क्वेश्चंस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, थोड़ी थोड़ी बातें मैंने बताई. PPIRP की एक जो बात आप पूछ रहे हो, सी आइडियली PPIRP इज नॉट देयर इन आवर मटीरियल, बट इट हैज बीन जैसे सप्लीमेंट्री जो हमारी आती है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें चीजें नोटिफाई हो गई हैं कि हाँ ये भी आ गया है, वो भी आ गया है, बट दे हैव नॉट गिवन अस कंप्लीट क्लैरिटी. सो मैंने स्टूडेंट से एक अपील की थी दैट व्हेन यू आर रीडिंग, प्लीज रीड PPIRP, बट राइट नाउ इफ यू हैवंट रेड PPIRP अभी तक, आई वुड जस्ट रिकमेंड कि एक बार जो है, ठीक है, जो रिविजन या जस्ट स्पीड वॉच दैट पर्टिकुलर पोर्शन PPIRP का, आप ना वो पढ़ लो. आपके मन में एक आइडिया आ जाएगा. PPIRP इज एंटायरली सेम, नॉट एंटायरली बट मोस्टली सेम एज CIRP. तो जिसने CIRP पढ़ा होता है ना, उसको PPIRP समझ में आ जाता है बड़े आराम से. कुछ पॉइंटर्स हैं, बस अपने दिमाग में रख लो. डोंट रीड PPIRP एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, because you have your examination in 4 days. Whatever you have read, you should be able to revise that well. That is more important. Okay. मैंने ये सेशन रैप अप कर दिया है. आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर विद मी द मार्क्स. मोर इम्पॉर्टेंटली, इफ यू हैव एनी सच डाउट्स होते हैं, तो मैं क्या होता है ना, बीच में चैट्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट? बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आती हैं. तो अगर कुछ भी आपके मन में डाउट रहा हो, यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट्स. द टीम एंड मी विल ट्राई टू रिप्लाई ASAP. वन मोर मैसेज फॉर माई registered students, that in case you have to ask me any query, because there are a lot of queries all the time and they are always being answered in the sequence, जो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस होता है. तो अगर आपके एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स अप्रोच कर रहे हैं एंड यू वुड वांट कि मैम भाई फटाफट से रिप्लाई कर दे, तो माय वन रिक्वेस्ट दैट प्लीज राइट अर्जेंट एट द टॉप, or you can simply write July 23 examination and thereafter you can send me the query. They will be answered on priority basis. चलो भाई चेक करते हैं सबके स्कोर्स.
अरे बाप रे, कितने ऊपर चले गए, कहाँ से शुरू हुए थे पता नहीं, आई एम सो सॉरी। राजेंद्र 17, अंकिता 15, थोड़ा और मेहनत बेटा। मैत्री 16, मधु 18, गुड। निशा 21, करेक्ट आंसर, वेल डन। दुर्गा 19, वेरी गुड। पूजा 19, सूरज 13, गुड। रीता एन, पता नहीं एन आपका नाम क्या है, बट 20 इज अ गुड स्कोर। अरे किसी और का भी 21 दिखा था मुझे। अनन्या वेरी गुड, 21। स्वीटी 19, 19 आंसर्स करेक्ट। पीयूष वेल डन बेटा। हर्षिनी 21, ग्रेट। दामू 19। ये 51, 66 कंफ्यूज्ड, ये क्या आ रहा है 51? आई थिंक आप वोटिंग शेयर्स वगैरह की बात कर रहे हो क्या? यू जस्ट कीप इन माइंड 66, क्यों अभी पूरा सब चीज मैंने बताया ना, 66%, दैट इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? वही है हमारा करंट प्रिस्क्राइब जिसके बारे में हमको समझना है। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। अभी हम लोगों को ना कंसेप्ट पे नहीं फोकस करना है राइट नाउ। व्हाट आर फोकस इज कि हमारा जो चीजें हैं हमको सही पता हो, हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज काम करें। ओके 21, अरे वाह श्री 22 on 22, great. चलो, I hope this session was useful. Share it with all your friends who haven't been able to attend the session with us live, and see you all in the next live session. Hope you're following the strategy which has been instructed. और कल टुमारो आई थिंक वी आर पुशिंग विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आपको जितनी चीजें मैंने दी हुई हैं स्ट्रैटेजी में, तब तक आपकी वो चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू एवरीवन, होप द सेशन वाज यूजफुल। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।